if you will see 2022, or we can say 21-22 global GDP, if you want to see, or if you will see the 2021-22 global GDP pie chart, then you will find that it is $104 trillion. 104 trillion dollar GDP. This is of the whole globe. पूरे जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन है टोटल वो है 104 ट्रिलियन डॉलर. उसमें आपके पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0.346 ट्रिलियन डॉलर. 0.34 less than 0.5 trillion dollar. It means 346 billion dollars, 346.3 billion dollars जो आपका कंट्री है वो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री है ना अभी पॉपुलेशन के हवाले से. Pakistan is 5th largest population, but what its contribution in GDP wise, that is 0.3 trillion. This is not only coming in top 10 countries, but is behind nearly top what we can say 50 countries. We are talking about the US, China, Japan, and these kind of industrial countries. They are controlling most of the economical GDP, or what we can say GDP production. They are contributing more GDP as compared to rest of the countries. So how we will manage the problems in economy as a whole? Just we are taking the Pakistan as a case study in this matter. हम पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी रख रहे हैं क्योंकि अभी प्रेवलिंग कंडीशंस जो हैं उसके हवाले से ये बेहतर सूट करता है कि हम पाकिस्तान को जो है ना स्टडी करें एज़ कम्पेयर टू जो उसके करीबी कंट्रीज़ हैं. कौन से करीबी कंट्रीज़ हैं आपके? इंडिया एक करीबी है, बांग्लादेश एक करीबी है, अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो हम 3-4 कंट्रीज़ के साथ उसका कंपेरिजन करते हैं. उसमें से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पोटेंशल क्या है और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है. इस हवाले से अगर हम जीडीपी देखते हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग पाकिस्तान विद इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना. चाइना आई एम गिविंग यू मोस्ट व्हाट वी कैन से प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिंग कंट्री इन अवर एशिया सब कॉन्टिनेंट. इन एशिया कॉन्टिनेंट चाइना जो है सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मिंग और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसके बाद इंडिया. ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश. ठीक है, तो उस हवाले से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस आप लोगों से ही ली है 1970s के बाद. ठीक है, और इंडिया आपके साथ ही आज़ाद हुआ है, तो उसकी इकोनॉमी का कंपैरिजन भी दे रहे हैं. ठीक है, और चाइना की भी कंपैरिजन दे रहे हैं क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली आपसे भी ज़्यादा है. तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग इन द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री, whatever you are producing in the boundary of country is called GDP. So if we are comparing the GDP of 4 countries, number 1 Pakistan, (2021-22) statistics I am giving you people. आपको ये 2021 और 22 की GDP का कंपेरिजन दे रहा हूँ. पाकिस्तान की जीडीपी है बेटा 346.3 बिलियन. ये सारी जीडीपी
US डॉलर में मैं मेंशन USD, ओके बेटा। और इंडिया is 3,173, 3.4 billion. And then Bangladesh is $416.3 billion. And then China, in your region, it is 17,734.1 billion. Now compare your condition. In Asia, after China and India, your country is on third number in population. Third number in population. Now look at the situation of gross domestic production. Where is China? Where is India? And where is Bangladesh? Where you or your country stood? It is less than all three countries' gross domestic production. If we are having less GDP, means we are collecting less amount, then how we will pay our debits, foreign debits, or what we can say loan, what we have taken, how we will pay it, and how we will manage our local problems until and unless we are not taking loan from international monetary funds or any other country, or not depending upon foreign aid. Thank you. That is the very drastic condition of your country. ये बात है. If we are looking at these situations, if we are looking at only one point, GDP. So all these things we will discuss in where? Macroeconomics. So if we are talking about the inflation, in 2001 and 2022, then in Pakistan it stood 9.5%. In 2021-22 is not clear yet, so it has been increasing. Now recent statistics suggest that it is above 25%. जो आपका क्वार्टरली इन्फ्लेशन स्टेटिक्स आता है उसमें से ये सजेस्ट किया गया है कि एट दिस टाइम अभी जो आपकी इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो 25% से ज़्यादा है. तो ये प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसकी स्टेटिक्स की डेटा मैं आपको बता रहा हूँ. जब तक वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसके उसमें पीरियड के वक्त जो इन्फ्लेशन था वो ये रिकॉर्डेड था 9.5%. ये भी कंपेरेटिवली ज़्यादा था दूसरे कंट्री से. आप इंडिया को देखेंगे तो अगर इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 5.1%. बांग्लादेश के अंदर अगर देखेंगे तो वो बांग्लादेश के अंदर क्या है बेटा 5.5%. और अगर चाइना देखेंगे तो वो है 1.0%. ये 2021 की डेटा मैं आपको शेयर करूँ. इन्फ्लेशन 2021 में कितना रहा है बेटा? पाकिस्तान में 9.5, हाईएस्ट इन रीजन. इफ यू आर टॉकिंग देन इट इज हाईएस्ट इन रीजन. इन दियर नेबर कंट्रीज 9.5, India is 5.1, Bangladesh is 5.5, and China is 1.0%. If we are talking about the unemployment, whatever we will discuss here in your macroeconomics, so if we are talking about the unemployment, okay, Pakistan is 4.4 as compared to total literate, those people who are willing to work, and India is 6. India is 6%. It is having more
population. On second or third number, this is in world. Because of that, what we can say, unemployment ratio in India is high as compared to Pakistan and Bangladesh. It is 5.2, and in China it is 4.8. So here Pakistan is performing better as compared, you can say, India and Bangladesh and even China. So Pakistan has more employment, less unemployment than India, Bangladesh and China. Okay, actually every country faces these challenges, and in economics, especially in macroeconomics, we are to discuss that what are these challenges and how to manage, how to handle these challenges. Because in Pakistan, most of the decisions are being taken by the government, major decision. There are less individual institutions who are taking the decisions on their own. So the government is sole authority to control all these things, because government control money supply. State Bank is the institution who is deciding the monetary policy. And who decide the CEO of the State Bank or the governor of State Bank? The government. The government of a particular country decides that who should be the chief executive officer, or what we can say, the governor of the State Bank. And when the government controls everything, then certainly government decides for all these things. So there is a big problem in handling all these problems in Pakistan, especially by the government. Pakistan is a case study for you people. We will discuss each and everything in inflation, gross domestic production, economic development, economic growth, and all these things along with the unemployment and monetary and fiscal policy in macroeconomics.